Okay, so going further, we've got the 25 top keywords, the top essence from the search term shoe rack. Now we will just add shoe rack over here and run keyword analysis. Okay, this is the listing optimization and keywords on fire tool for this one. So this will just work on this one, and we can pause the video for a while, and then they will give us the keywords from Zone Guru, and then we will compare and find out which keywords are new for us from Zone Guru, which keywords are from Helium 10, and then we can find the best keywords for our research. Okay, so the session is complete. Now we can just say, okay, this has resulted in 374 unique keywords for us. We will just say view, and there you go. Now for this one, it is quite similar. Now what they tell us is also the same thing, but they also give us a very good view of how to work with the data. So they have a ZG score, Zone Guru score, that's 1 to 100. If if it's 100, then we should be adding that into our listing, and if it's 0, then maybe not. And the keyword revenue, combined monthly revenue, the keyword is driving for listings in the top 25. So since we have top 25 as competitors, and in search volume, this is the estimated search volume, this is the top 25 competitors that are in this keyword. Okay, so from the 25, 10 of them are in the top 25. Okay, and DG launch, this is the number of units you should sold to aim during your product launch period. So basically आपने 33 units अगर आपने daily के बेच लिए, then you will be in the top rank for this keyword shoe racks, and then shoe rack is different, 354 units to be sold daily. Of course, this is not possible, but then again, this is what the data is telling us. Average number of units sold per month, रेटिंग्स कितनी है इस टाइम पे, प्राइस क्या है इस टाइम पे, ठीक है ना, उनकी एवरेज प्राइस फॉर टॉप 25, कीवर्ड टाइटल, परसेंटेज ऑफ लिस्टिंग्स that have included this in their title. So 92% ने shoe rack ऐड किया हुआ है, और सिर्फ 4% ने shoe racks ऐड किया हुआ है. But obviously this is a different intent, let's just say, because shoe racks वाला बंदा मल्टीपल खरीदने भी आया हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है. एंड देन अगेन दिस इज अ बिट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट इफ यू आर सेलिंग दिस वन शू रैक, ठीक है. पीपीसी पेड वो चाह रहे हैं कि कितनी होनी चाहिए. Then again, this is just an estimate. We will see how to find a better estimate as well. Top 3 keywords, combined monthly revenue for top 3 listings. Top 3 listings कितना revenue मिल रहा है इसमें, इस keyword के ऊपर. Combined percentage of clicks at the top 3 listings received in comparison to all the clicks. 28% को top 3 को 28% क्लिक्स मिल रहे हैं इस टाइम पे. टॉप 3 कन्वर्जेंस, टॉप 3 को इसमें 30% कन्वर्जेंस मिल रही है, ठीक है. दिस इज समथिंग जो कि हमें SFR वाली रिपोर्ट से भी मिलता है. तो the Zone Guru is giving us this report. That's why I like it. Okay, export to CSV, enter. Okay, let's move it over there, and then okay, enter please. Okay, so once we have this one, then we can just copy this sheet into our tutorial sheet. Okay, create a copy, and there we have it. Okay, so now this is at the end of it, please. This will be Zone Guru keywords. Now, in order to find if all the keywords are in Zone Guru, so we will say, okay, we look up, find me this in this category. Okay, so if the keyword is in there, then we will get the Zone Guru score. If not, then we can get and not available. So we will say, okay, this is in there, that's for sure. Now there you go. अब जो है हुआ ये कि हमने यहाँ पे जोन गुरु का स्कोर भी निकाल लिया, जोन गुरु की अवेलेबिलिटी निकाल ली है. इसमें जोन गुरु में ये कीवर्ड था या नहीं था, ठीक है. we've done this for all the keywords, that's for sure, ठीक है. अगेन काफी ज़्यादा कीवर्ड इसमें नहीं भी आएंगे, so we will see कि हम किस तरह कर सकते हैं इसको, ठीक है. Now we will just say sort by smallest to largest. This is done now, and now we can say give me a 0 for all the ones जहाँ पे NA है, क्योंकि वहाँ पे जोन ग्रुप ने वो कीवर्ड हमें नहीं दिया, ठीक है. सॉरी, 0 0. Then we can have a 1 for all the keywords which Zone Guru has provided us, ठीक है.
Okay, so now we have the availability. ZG availability इसको भी हम ZG में ये available था या नहीं था. Now we also want to find the CG search volume, because then again search volume is going to differ with all the okay. Yes. So now I want the zone guru search volume is equal to find me this keyword in this list and return me the fourth column. This is the fourth column. So fourth column. Okay, I guess. Oh, sorry, I forgot to use VLOOKUP. There you go. Zone guru says it has 264, and then again, if we just say, and then we will have some keywords where it does not have any, search volume. So we will just say 0.01. Okay. And for helium search volume, we can also have this one. So 0.01, we already have it. And I just want to ensure that there is no value with no cell without a value. So even if we have it in blanks, we will just say, okay, we do not have it. So 0.02 maybe. Okay. This is basically the same thing saying as there is no search volume in helium 10 for this keyword. Okay. Just write 0.01 if you are not comfortable remembering all this. Okay. I understand this is getting a bit complicated, but this is important for finding all the keywords and all the better analysis for this. Now just smallest to largest will give you the keywords. Now see, it says 67, but they don't, both of them have a different search volume. That's why I always want to have both of the analysis and then decide based on this one. Okay. So we always want to get this one. Okay, now let me just, color the cells that are very important for us, and then, maybe we can use the other ones very important, but for this one, let's just say, okay, now keyword title broad exact, and this one is very important. So this what it tells us is that अगर तो किसी बंदे ने ये एग्जैक्ट फ्रेज डाली हुई है पूरी अपनी टाइटल के अंदर, तो वो जो है काफी ज़्यादा वो इफेक्टिव होती है. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल अगर आप शेल्फ्स का वर्ड डिफरेंट जगह पर डाल रहे हो और जो है आपकी और जो आपकी है ये शूज कहीं और डाला हुआ है, तो आप कहते हो शू रैक शेल्फ्स. सो दैट वुड मीन कि जो आपने शू रैक का वर्ड है वो आपने एग्जैक्ट डाल दिया है टाइटल के अंदर, और जो शेल्फ्स का वर्ड है वो आपने उसको ब्रॉड में डाल दिया टाइटल के अंदर, लेकिन वो इन द सेम फ्रेज नहीं है. अब इसका मतलब यह है कि हमने जो ये दो टाइटल के दो कॉलम्स लेके आने हैं अपने पास इस डाटा के अंदर. ठीक है. सो वी विल से ओके फाइंड मी now broad title usage and exact title usage for all the keywords. So again we look up this keyword. Okay. Now what we can easily do is we can say जो ZG में available ही नहीं है उसको हम already साइड पे कर देंगे. ठीक है. तो वो हम उसको already लिख देंगे ठीक है 0.01 because we don't have this data. Okay. From ZG. Okay, now we will just say this, just the ones which are available in ZG, in Zone Guru basically. उसमें हम करेंगे find with this keyword. I want to find this keyword and find it in this A column, and I want to find 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10th column. And for this one, I want to find the 11th column. Oh, I don't know what happened, but yeah, I know what happened. Okay. When you have a filter applied, always just drag this. Okay. This will help you
Okay, got it now. Now, this is the best list of keywords that we have from 3 different sources now. Okay, तो अब हमने करना है, फॉर एग्जांपल देखिए ये शू रैक का वर्ड है, ये इन दो जगह पे आ रहा था, इसमें एक्सपेंडर में नहीं आ रहा था। शू ऑर्गेनाइजर है, ये दोनों में आ रहा था, एक में नहीं आ रहा था। ठीक है, अब शू रैक तो प्रोजेक्ट का वर्ड है जो कि तीनों में आ रहा था, बट देन अगेन यू वुड वांट टू नो इफ यू आर सेलिंग इट दैट। ठीक है, अब इसमें करेंगे ये हम लोग कि जी हम कहेंगे okay, this is the ultimate list that we want to filter and move forward with. Now going further, we will be filtering them for relevancy. So what we will be doing is we will just copy this, just make a duplicate. Okay, so now these will be only the relevant keywords. So now this is all keywords, this will be relevant keywords. Okay, relevant keywords. Now we'll say okay, let's try to find which does not contain shoe. Okay, that is one way of saying okay, let's try to find which does not contains shoe. Now यहाँ पे zapatos आ गया है, ठीक है, so that means that was Spanish in for shoe, if you remember correctly. So we can say okay, and custom, and it also does not contain zapat. Okay, now you have some keywords which do not have anything. So if I want to find, these are like 12,000 कीवर्ड, सो 12,000 कीवर्ड में ऐसे मिल गए हैं उसमें से जो कि ना उसमें शू है, सो शू ऑर्गेनाइजर, शू, हमने यहाँ पे रूट कीवर्ड निकाले थे, शू रैक, शू ऑर्गेनाइजर, शू स्टोरेज, शू कैबिनेट, शू शेल्फ एंड ज़पैटोस। सो इसमें से कोई भी अगर कीवर्ड नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो हमारा एलिमेंट कीवर्ड नहीं है। ठीक है, सो थ्री अगर हम थोड़ा सा देखें भी, आउटसाइड स्टोरेज, एंट्री वे बेंच, लॉकर ऑर्गेनाइजर, बुक शेल्फ, growth organizer, tall plant stand. They have nothing to do with shoe organizer. That is what we are selling. So we will delete all these keywords. We still have them in our all keywords file. Just remember that, okay? Delete them. That's it. Now I guess it was not successful, so we will do it again. Does not contain shoe and does not contain the part, which is Spanish for sugar. Okay. So now what we will do is we will just go up, select this way, and delete row. It will take some time, that's for sure. चलिए गोइंग फर्दर, तो हमने यहाँ पे कुछ निकाल लिया है, हमने इनको ये भी कर लिया है कि जी हमने इंपॉर्टेंट वाले कीवर्ड साइड पे कर लिए हैं। ठीक है, सो इसको हमने कहा था कि हम ऐसे कीवर्ड्स निकालना चाह रहे हैं जो कि रेलिवेंट हो, बट हम एक स्टेप मिस कर रहे हैं, वो ये है कि वी वांट टू फाइंड ऑल द कीवर्ड्स इन जोन गुरु व्हिच आर नॉट इन हीलियम 10 फॉर आवर रिसर्च। सो उसका तरीका ये होगा कि आप जोन गुरु के फाइल में जाएंगे, आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे कॉलम एंड हीलियम 10 अवेलेबिलिटी के नाम से। इस टाइम पे हमने H10 के अंदर वो कीवर्ड्स फाइंड कर लिए हैं जो कि जोंगुरु में थे, बट जोंगुरु कैसे कीवर्ड जो यूनिक हो, जोंगुरु में है H10 में नहीं है, तो वो भी हमें फाइंड करने हैं। तो वी लुक अप, find me this keyword in H10 file. Okay, this is not good. A2 comma, this is A1 का मतलब है यहाँ पे कि वो कीवर्ड है, और इसका मतलब है कि ये वाला कीवर्ड वहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब श्योर है कि कीवर्ड एक खास तरह से स्पेलिंग मिस्टेक है किसी बंदे की, बट दिस इज अ कीवर्ड व्हिच इज नॉट इन helium 10. So now we will just say okay, rank me by smallest to largest. Let's just go ahead and find all the keywords which are not in helium 10. So अब यहाँ देखिए जी शू रैक है, ज़ैपेटेरा है, शू रैक क्लोजेट है विदाउट एनी
spaces, long shoe rack for closet floor, shoe cabinets with doors, shoe cabinet benches are all not available in Helium 10. So what we will do is we will just say, okay, copy this, copy, and go to Helium 10, go down and input them here. Now we will say, okay, they are not available in Helium, not available in Expander. Let's do this and then say, okay, 1 means available in Zone Guru. So we will not have any such volume from Helium. 0.01 is fine. We will have such volume from Zone Guru. So we look up, find me this keyword from Zone Guru's file, and I want the 5th column, okay, which will have the search volume. And then again, if you want to just find just 1, 2, 3 keywords which are not available in Helium, that means 90% sellers are not looking at it. That's what we're talking about. Then we look up, find me this keyword in SFR file, okay. So second column is what I need. See, not available. Okay, not sure, no problem. But then there are some keywords which are available in SFR as well. So that means if they're not available in Helium, then and in available in SFR, that means we were missing out on these keywords. So we want to find them. Copy, 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 copy. हमने पहले बताया था कि हम all lines क्यों करते हैं ताकि हम थोड़ा सी तरीके से कर सकें. But now we have other keywords. Just paste them and then that's fine. Okay. So now abroad this we also find out. We look up, find me this keyword in the 11th and 12th. So basically हम चाह रहे हैं कि जी हम यहाँ पे इसका पता कर लेंगे कि कितने लोगों ने यूज किया हुआ है अपना टाइटल के अंदर, ब्रॉड के अंदर. एंड द सेम थिंग we want to find out if they've used in exact. So अगर वो ब्रॉड में यूज नहीं करे तो exact में तो हो भी नहीं सकता. ठीक है, यहाँ पे वो जो है बराबर चल रहा है उनका. ठीक है, so we can say okay, now copy and paste as values and then format आप चेंज कर दें इनका. So this will be done like this. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे कुछ कॉलम्स बना लिए जो कि इंपॉर्टेंट वाले हैं. ठीक है, now we'll be doing them for relevancy. Last time relevancy हमने किया था बट वो एरर आ गया था, एक्सेल नॉलेज पॉइंट में चला गया था. So what we will do is we will say okay, make a new one for relevant keywords, and very broad filter can be the keyword should contain shoe or contain product. So this is 5,400 keywords. So that means we are down from 17,000 to 5,000. Okay. Save first, so we don't lose data. Copy them, go to this one and paste. Okay, now we have the keywords in element file. Okay, now we don't need to worry about these ones. Okay, now just save, just for the sake of it. Go to relevant keywords. Now we need to try to filter these keywords for relevancy now. Okay, for that, this is a tool trick that I normally use with my copy this and go to word frequency counter. Just use this one by writewords.org.uk and paste them over here. Submit. अच्छा जी, तो हमने यहाँ पे वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंटर इस्तेमाल कर लिया है. अब इसमें देखें शू जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है. ऑब्वियसली रैक इज द सेकंड मोस्ट यूज्ड वर्ड, ऑर्गेनाइजर इज अनदर वर्ड, शूज इज अनदर वर्ड, स्टोरेज इज अनदर वर्ड. अभी सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं. बट यहाँ पे क्लोजेट जो है, हम क्लोजेट वाला शू रैक नहीं बेच रहे. हमने स्टार्ट में कहा कि हम ये वाला बेच रहे हैं. इफ यू वांट टू गो बैक टू द वीडियो, गो टू द सेकंड वीडियो. अब ये वाले जो कीवर्ड है ये काम के नहीं होंगे हमारे क्लोजेट वाले. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन से ओके, find me the keyword with which contains closet. Okay, and then you can sort by SFR to find the most important keywords for closet वाली चीज. closet का मतलब क्या है, नहीं कैसा होता है ये. Go to Amazon to find this. हमें खुद नहीं तुक्के लगाने इसके अंदर. although मुझे पता है कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, बट
I think we can go to Amazon and find that out. ठीक है, Amazon.com. Find a good location, that's for sure. This is not a good one. हाँ सही है, तो हमने यहाँ पे सर्च करना है और पता करना है कि कौन सा होता है प्रोडक्ट वाली इंटेंट जो है इस कीवर्ड की, वो कौन सी किस्म का शू रैक बेचते हैं। तो हमें पता ही लगता है कि जी यहाँ पे कुछ जो है वो डिफरेंट है एंड what we find is that यहाँ पे भी वही वाले बिक रहे हैं हमारे शू रैक जो हम बेचने चाह रहे हैं। हम बेसिकली इस तरह का बेचने चाह रहे हैं, इस तरह का, इस तरह का जो है, ठीक है। तो we will say okay, so this one is, we're not selling this one, but the ones ranking at the top and in the search results are also the ones which we are selling, so the closed ones remain, ठीक है। हम इसको डिलीट नहीं करेंगे, ठीक हो गया। ट्राई टू फाइंड सम अदर कीवर्ड्स एज वेल, ठीक है, जो कि इसमें शू क्लोजर जो है ये इसको भी पता करते हैं क्या इसका मकसद है। आई थिंक दिस इज नॉट अ वेरी रेलेवेंट कीवर्ड। अच्छा ये देखिए, इसमें थोड़ा सा जो है वो ये कीवर्ड्स जो हैं ये थोड़ा डिफरेंट आ गया कि इसमें इंटेंट ये वाली आ गई है हमारी। तो दिस इज नॉट व्हाट वी आर सेलिंग, सो दिस कैन एटलीस्ट बी हाफ रेलेवेंट बट नॉट कम्प्लीटली रेलेवेंट, ठीक है। तो अब हम इसका डिसीजन ये कर रहे हैं फाइनली कि जी ये हमारे इसमें डिसीजन हमारा ये होगा कि रेलेवेंसी जो है हमारे हाफ रेलेवेंट है कीवर्ड्स, तो वी कैन नॉट टारगेट देम इन द वेरी स्टार्ट, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। So this will be half relevant and then just go back to the word counter. यहाँ पे जी शेल्फ वाला है हमारा, तो लेट्स फाइंड आउट कि शेल्फ क्या होता है, ठीक है। Okay, find me the keywords with shelf. Okay, and then sort by this one. तो शू शेल्फ क्या होती है हमारी, ठीक है। लेट्स फाइंड दैट आउट, ठीक है। हम जाते हैं और कहते हैं कि जी ओके so we'll search it on Amazon कि शू शेल्फ क्या होती है, सॉरी। Now what we find out is कि शू शेल्फ जो है वो हमारी एग्जैक्ट इंटेंट वाली चीजें हैं, इसमें जो बाकी इरेलेवेंट चीजें हैं वो कम है। देखिए एग्जैक्ट की चीज आ रही है, ठीक है। So what we do is we say okay, shoe shelf is relevant, so shoe shelf closet organizer is still relevant। यहाँ पे शेल्फ आ गई, वहां पे इसका मतलब कि वो हमारे काम की चीज है, दिस इज relevant and drag it down। I know यहाँ पे जो कुछ रिपीट हो रही है बट इसका मतलब है कि शू शेल्फ जो थी वो काम की थी, क्लोजेट मेड इसके ब्रांड का नाम था यहाँ पे जो है इस वाले में, ठीक है। You will just say okay relevant, there you go, शेल्फ वाला एलिमेंट है, ठीक है। Just save it so we don't lose any progress, then we just go to the counter again। Please tell me what's next। टीयर क्या होता है, अब टीयर वाला ढूंढने जाके, ठीक है। So just go back and say I want the ones with tier। बड़ा यहाँ पे भी जो है वो आप शॉर्ट कर लें इसको। अब देखें यहाँ पे हम अब यहाँ पे पता ही लगता है कि जी टीयर डिफरेंट हैं, जिसमें वो आपको फर्दर डिफरेंट नंबर ऑफ टीयर्स देता है। So let's assume for a moment that we have 3 tiers or I don't know 4 tiers maybe। So let's just assume that our product has 3 tiers। Obviously this can be dependent on, अगर आप लोग जो हैं वो ये पता करना चाह रहे हैं कि let's say यहाँ पे अगर हम इंटेंट लिख लें एक दफ़ा, ठीक है, इंटेंट लिख लें, ठीक है। So we can say on product hunting stage कस्टम फिल्टर में जाएं और एंड में कंटेन्स में जाके लिख दूं यहाँ पे मैं के लिए 3 टीयर वाले कितने हैं, लेट्स फाइंड आउट। अब इसके जो टॉप 3 कीवर्ड हैं एटलीस्ट उनमें कुछ 6-8 हज़ार का सर्च वॉल्यूम है। यहाँ पे ये 5,500 बता रहा है और ये 12,000 बता रहा है, तो गुरु 12,000 बता रहा है इन टॉप 2 में। बाकियों में थोड़ा बहुत कम है, लेकिन जस्ट सी
क्या सीन है, ठीक है। इसलिए हमें ज़्यादा कीवर्ड्स दे रहा है इसके अंदर से। सो अब 3 में इतना है। अगर हम इसको चेंज करें जाके तो हम यहाँ लिखते हैं जी 4। तो 4 में जो है यहाँ पे SFR 2 में है, इसका मतलब है जो कि 2 कीवर्ड्स हैं जो कि यहाँ हीलियम बता रहा है कि 5,500 है और जो जोनगुरु बता रहा है वो 8,000 है। सो वी कैन इजीली से कि 3 टिकर वाला काम चल रहा है इस टाइम, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू इज, अगर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि हम 3 टियर बेच रहे हैं तो 3 tier would be relevant for us, and the 4 tier would be irrelevant for us, because if someone is writing 4 tier, then he is looking for a 4 tier, you know, that one. So this can be half relevant for us, but never full relevant. So 4 is half relevant for us now. हमने 3 assume कर लिया कि हम 3 बेच रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। सो जी हम कहते हैं ओके 3 वाला, अब जो 3 वाला है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है क्योंकि वो काफ़ी अच्छा रेलिवेंट है। सो जी we can write super relevant. So we are having 3 to 4 different categories: half, relevant, and for super. ठीक है, तो हम 3 tier वाले को कह देंगे कि जी ये super relevant है हमारा। Then we can say okay, इसमें हम इसको हटा देते हैं, इसको सॉर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास टीयर में हमने इनको सॉर्ट नहीं किया कुछ को अभी तक, ठीक है। कुछ सुपर है, कुछ रेलिवेंट पड़े हुए हैं क्योंकि ये 1 टीयर है, 10 टीयर है, 1, 5, 2, 2, 2, 2, 3। तो इसका मतलब ये भी हाफ रेलिवेंट हो गया क्योंकि हम 3 वाला बेच रहे हैं, ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग एल्स, ओके। 2 टीयर, 10, 5, इसमें 3 वाले नहीं हो सकते, तो ये बेसिकली हाफ रेलिवेंट ही रहेंगे हमारे लिए। हम इसमें बाद में स्केल कर सकते हैं बट वी शुडंट बी सेलिंग देम डायरेक्टली, ठीक है। चलो जी ये हो गया हमारे पास। नाउ ओके, गो टू सीक्वेंस काउंटर अगेन, डोर वाला। अब डोर वाला क्या होता है पता नहीं हमें, ठीक है ना। So again, go to this, filter it, contains door. This is the most you know, frequently missed step relevancy check वाला, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है और ये होता भी ओवर द डोर जो है। ये अब ये ओवर द डोर वाला तो हम नहीं भेज रहे। सो लेट्स जस्ट अज्यूम दैट कि जी इसमें ये भी डोर भी हो और ओवर भी हो, वो तो हम नहीं भेज रहे, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है जी, इररेलेवेंट, ठीक है ना। एनीथिंग दैट हैज डोर एंड हैज ओवर, दैट मींस वो ओवर द डोर लिखा हुआ है कहीं ना कहीं पे, तो ये हम नहीं बेच रहे हैं, ठीक है। नाउ गो टू दिस कस्टम फिल्टर अगेन, रिमूव द ओवर थिंग, ओके, एंड नाउ से ओके जी आप मुझे रेलेवेंट साइड पे कर दें मेरे लिए आप, ठीक है, ताकि मैं बाकियों को कर लूँ अब मैं, ठीक है ना। डोर शू रैक, आउटडोर शू रैक वेदर प्रूफ, शू रैक फॉर डोर, door shoe organizer. So these can be, you know, very good keywords normally. So they are relevant keywords. Now what you can do is you can say कितने हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये hanging का वर्ड आ रहा है, so hanging वाला तो हम नहीं बेचते। So again write say custom filter and contains hanging. This is not irrelevant, sorry. Okay, there you go. Go to the filter again, remove the hanging, there you go, ठीक है। अब दोबारा आते हैं नहीं, शू रैक फॉर डोर, आउटडोर, आउटडोर वाला तो हमारा है एक तरह से, ठीक है। आउटडोर इज रेलिवेंट, ठीक है ना। बिहाइंड द डोर, दिस इज अगेन समथिंग एल्स। सो वी वुड से इफ समथिंग हैज डोर एंड इट हैज बिहाइंड, दैट मींस वो बिहाइंड द डोर की बात कर रहा है। दिस इज नॉट समथिंग वी सेल, सो इररिलेवेंट एंड देयर यू गो, ठीक है। इस तरह हम लोग करते जा रहे हैं उसको। मैं चाह रहा हूँ कि आपकी वीडियो लंबी हो जाए लेकिन वो काम पूरा करते। So redo the again. Okay, I'm sorry, I think we moved the filters. Contains, हम tier वाले को tier नहीं door वाले को कर रहे थे, and then we were still to do this one. Okay, जैसे bench जो है वो हमारा नहीं है, तो any keyword with bench is
ओवरऑल अगर कीवर्ड बेंच वाला है तो हम वो नहीं कर रहे, ठीक है जी। यहाँ पे ऑब्वियसली ये अब आपके प्रोडक्ट के ऊपर है कि अगर आपने प्रोडक्ट हंटिंग स्टेज के अंदर है तो फिर आपको ये कीवर्ड्स जो हैं ये पता रहना चाहिए कि बेंच बिकता है, ये इतना बिकता है, ये इतना बिकता है, ठीक है। सो ये बेंच वाला जो है यहाँ पे इसमें लिख देने के लिए बेंच वाला कीवर्ड है, ठीक है ना। एंड दिस इज इरेलीवेंट बिकॉज बेंच हमारे पास नहीं है, हमारे प्रोडक्ट में बेंच नहीं है इस टाइम पे, ठीक है ना। ओके, नाउ वी जस्ट गो अप एंड से गो बैक टू डोर, हम कर रहे थे door, then you have to read them because at the end of the day, and so now they buy the door. This is a good one. Door entry with doors. Now with doors का मतलब है दरवाजों वाला, इसका मतलब वो हम नहीं बेच रहे, तो हम कहेंगे जी के if it contains with door, that is not we are selling, irrelevant, ठीक है। Go to the filter again and custom filter, इसको खत्म कर दें ताकि दोबारा वही आ जाए। कि मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया हुआ है कि जी इरेलीवेंट वाले मुझे निकाल दिया कर, तो हर दफ़ा उसको साइड में कर देता है इरेलीवेंट वाले को, ठीक है। नाउ से फॉर डोर दिस इज इरेलीवेंट, आई कैन इजीली से टू ट्रे फॉर इंडोर, दिस इज नॉट, टू रैक इज ओके, so this is shoe tray, this is irrelevant. Front door shoe rack, this is relevant. Shoe holder for back of door, that is not relevant, okay, irrelevant. Shoe door rack organizer, that is relevant. Outdoor shoe storage is relevant, this is relevant as well, relevant. For front door relevant, back of door this is irrelevant. Shoe organizer door, this is relevant, relevant, relevant. A holder is not a word, relevant, irrelevant. So we can easily say anything that is holder. So ये shoe holder जो भी है वो irrelevant है, ठीक है। So we can say this is holder intent. तो ये irrelevant होगी क्योंकि obviously हम लोग यहाँ पे keywords देखते जा रहे हैं कि ये trend निकलते हैं जहाँ पे वो हमारा irrelevant होता है, ठीक है। Again go back to door वाली intent, ठीक है ना। यहाँ पे हम आते हैं show storage door, shoe hanger। अब hanger भी हम नहीं बेचते, हम तो रैक बेचते हैं, तो वी कैन से कंटेन्स में हैंगर पता करें एंड ऑल ऑफ देम आर व्हाट आर दे आर इरेलीवेंट। सो हैंगर कैन कंटेन की हैंगर एंड दिस इज इरेलीवेंट। जस्ट टू गेट अ हैंड ऑफ इट कि हम कितने कर चुके हैं, तो हम अभी तक 1200 कर चुके हैं, अभी हम 3000 और करने हैं। देन अगेन दिस इज हाउ इट इज एट द मोमेंट, ठीक है। सो दिस इज समथिंग एल्स दैट आई मैनेज। वर्ड इज कीवर्ड व्हिच वी आर नॉट सेलिंग, so we are not selling the word in, तो we say word जितने भी हैं वो रिलेवेंट हो जाएंगे क्योंकि वर्ड हम नहीं बेच रहे, ठीक है। सो वर्ड वाला इंटेंट है इसका, और ये हम लोग सारे के सारे वर्ड की वजह से छोड़ रहे हैं। देयर यू गो, ठीक है। नाउ अनदर वे ऑफ फाइंडिंग दैट इज कि जी हम कहते हैं कि डज नॉट कंटेन रैक। इसमें क्या आता है, इसमें आता है जी कि अब यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ये है जी हैंगिंग, हैंगिंग वर्ड जो है वो रेलेवेंट वाला है। तो find that out and say anything that contains hanging is hanger वाली इंटेंट है इसकी, और ये irrelevant है, ठीक है।
सी इस तरह आपको कीवर्ड्स मिलते रहेंगे और आप उस पर उनको रैंक करते रहेंगे और इंटेंट्स भी लिखते रहेंगे अगर पॉसिबल है तो। दिस इज ऑप्शनल नाउ, ठीक है, सारा कुछ ऑप्शनल है वैसे। आप कीवर्ड रिसर्च करो ही ना, तो ऐसे लॉन्च कर लो, गुड थिंग। ठीक है जी, दोबारा जाते हैं रिजोल्यूशन टेम पे। इसमें रैक लेना है वो, वहाँ पे मैं कीवर्ड ऐसे नहीं दे सकते जो कि इररिलेवेंट कीवर्ड्स बता देंगे हमें। तो जी यहाँ पे 4 टियर वाला है जो यहाँ पे है शू कभी जो है, ये मोस्ट प्रोबेबली ब्रांड का नाम है किसी का। यहाँ पे हमें क्या कह रहे थे, हैंगिंग वाला इररिलेवेंट है, ठीक है, जस्ट टू सॉर्ट, ठीक है। जो हमने अभी तक सॉर्ट नहीं किया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। जो हम कर चुके हैं वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देन अगेन after and shoe stand is okay, shoe storage is okay, but I just want to find out storage का मतलब क्या होता है। अगर वो चाह रहा है कि उसकी इंटेंट जो है वो मोस्टली बंद वाली है, तो फिर हम वो नहीं बेचना चाहते ऑब्वियसली उस कीवर्ड के ऊपर। ओके, स्टोरेज इज समथिंग, इसमें जो है देखिए, अगर आपको समझ आए तो स्टोरेज वाला जो पार्ट है वो मेजरली इंटेंट जो है वो उसकी ये वाली है, क्योंकि इसमें मैं काम पहले से कर चुका हूँ इसलिए इसका बेहतर आइडिया है। स्टोरेज वाली इंटेंट जो है वो उसकी मेजर इंटेंट किया है, बट ये वाले भी बिक रहे हैं, सो दिस इज हाफ एलिमेंट अगेन फॉर अस, ठीक है। सो वी विल से ओके, लेट्स जस्ट फ्रीज टॉप रो, ठीक है। तो वी विल से ओके, एनीथिंग विद स्टोरेज इज हाफ एलिमेंट, क्योंकि वो मोस्टली जो है वो हमारा द्वारा रैक नहीं चाह रहा, वो चाह रहा है स्टोरेज, ठीक है। इट इज हाफ एलिमेंट फॉर अस। इसमें देखें जी, यहाँ पे हमने जहाँ पे इररिलेवेंट है उसको नहीं हमने छेड़ना, वो ऑलरेडी रिलेवेंट है, इररिलेवेंट साइड पे कर दें, बाकियों को आप देख देंगे ये हाफ एलिमेंट। तो जहाँ जहाँ पे वो इससे पहले नहीं बताया था आपने उसको, वो आपको पता लगे ये हाफ एलिमेंट कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इंशाल्लाह 40 मिनट्स की वीडियो यही वजह होने वाली है, बट देन अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डाउन करें, गो टू दिस अगेन एंड से anything does not contain rack. Now we're just trying to find all the keywords which are still not organized now. हाँ जी, कैबिनेट जो है वो तो ऑब्वियस सी बात है हम नहीं बेच रहे, कैबिनेट जो है वो क्लोज होता है नॉर्मली, सो वी विल से ओके, there you go, contains cabinet, this is half element because वो कैबिनेट है। Go at it again, there you go, ठीक है। अब हम दोबारा आते हैं फ्रीक्वेंसी काउंटर में और पता करते हैं ऐसा कीवर्ड हमें मिल जाएगा अगर इस तरह का। तो जी ये बेंच है, हैंगिंग है, स्टैंड है। स्टैंड पता करते हैं स्टैंड क्या होता है जी। अब पता चलता है मकसद क्या है, इस तरह जाएं, कंटेन्स में स्टैंड लिखें, एंटर, सॉर्ट बाय एसएफआर, वेयर इज एसएफआर, दिस इज एसएफआर, ओके, दिस इज फ्री स्टैंडिंग शू रैक्स, ठीक है। लेट्स जस्ट फाइंड आउट व्हाट दैट इज। That is relevant obviously. To stand and shoe, stand जो है वो इतना relevant कीवर्ड है हमारे लिए, तो we will say okay, this is relevant and the intent is stand। relevant को हमने दोबारा चेक करना है, ठीक है, because this is going to be a very long video series। Okay, now that we have
Golf shoe cleaner stand. This is irrelevant. This is very irrelevant. Shoe stand tall. हम tall वाला नहीं बेच रहे, हम 3 tier बेच रहे हैं, so irrelevant as well. But this phone stand shoes, I don't know what that is, but let's just find out. Very nice, irrelevant. So anything that is tall is irrelevant. Okay, okay, tall. Anything that is on is already irrelevant. So again, go back to does not contain rack and find me the ones which are blanks. Okay. Shoe organizer is relevant. Is also relevant. Sorted by SFR. हम टॉप वालों को तो खुद कर सकते हैं बैठ के. Shoe bag is irrelevant. Shoe organizer is relevant. Shoe tray is irrelevant. So anything with tray is irrelevant. How does that work? Oh, sorry. I think that is tray is relevant with tray intent. Okay. Now again sort by smallest to largest and only the blank ones that हम show करना करते जाएं. This is relevant, of course. Relevant. Bamboo नहीं बेचते, तो bamboo वाला खत्म होना चाहिए. Contains irrelevant and bamboo intent. ठीक है जी. Sort by smallest to largest. मेटल वाला हम बेचते हैं ब्लैक. शू का भी जो है ब्रांड का नाम लग रहा है मुझे. Go to Google to find out. Yeah, this is a brand. Yes. So anything that contains kabhi is to kabhi. So what we say is irrelevant. या branded लिख दे इसको आप. किसी के ब्रांड कीवर्ड है तो हम उस पर compete मुश्किल कर पाएंगे स्टार्ट में. एटलीस्ट हम बाद में टारगेट कर सकते हैं टू स्नैच देयर शेयर्स, बट नॉट एट द मोमेंट. ठीक है हम लोग. ओके ये हो गया. दोबारा से आप इसमें आ देखिए जी, मुझे ब्लैंक वाले चाहिए. तो यहाँ पे दोबारा कंटेनर्स जो है वो हम नहीं चाह रहे. तो एनीथिंग विद कंटेनर्स is irrelevant with container intent. कंटेनर्स हम नहीं बेच रहे. ठीक है जी. दोबारा चलें, खत्म कर दें. दोबारा यहाँ पे सॉर्ट हुआ है जी. मेटल शू रैक जो मेटल वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है. बास्केट भी हम नहीं बेचते, तो ओके बास्केट इज irrelevant. Basket intent. Okay, so this is half relevant वाला जो पार्ट है ये भी बास्केट relevant हो जाना चाहिए. Okay. Now going further, just save it first so we don't lose any data. Okay, going further. इस तरह करता कोई नहीं है वैसे, इतने भी कीवर्ड रिसर्च हो भी लाइव पे. लेकिन चले खैर. Remove this one again and only find the blank ones. Let's find out कितने रैक कितने गए मेरे. 100 भी आते हैं माशाल्लाह से.
अच्छा ठीक है जी, इसमें हो गया। अब हम कहते हैं कि ओके मेटल चू रैक जो है, इसमें एक छोटा छोटा फिल्टर ही लगाया जा सकता है कि हम अगर इसको ये वाले खत्म कर दें जिसमें SFR नहीं है तो हम उसको छोड़ देते हैं एक दफा के लिए, ठीक है। ओके, सो नाउ वी हैव कितने 411। ओके, दिस इज बेटर देन दैट एटलीस्ट। इसमें इशू ऑर्गेनाइजर अंडर अंडर बेड वाला जो है, तो यहाँ यहाँ पे बेड आ जाएगा, वो भी किसी काम का नहीं है हमारे। So we will say irrelevant with bed intent, ठीक है जी। ओके 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 ओके। बेडरूम shoe rack is different because this is normal keyword relevant है। अच्छा यहाँ पे आते हैं तो दोबारा हम आते हैं इसके ऊपर। Remove this again, only have this once। Bag is also irrelevant keyword। बैग एंड बैग दोबारा खत्म करें। शू केस जो है वो भी काम का नहीं है। कंटेन्स केस जो है वो भी irrelevant है because we are not selling cases। Now we want to find out anything with box is also not relevant, irrelevant with box intent, ठीक है जी। अच्छा जी, सो नाउ वॉल वाला जो इंटेंट है मेरे ख्याल में ये भी गलत है, क्योंकि वी आर नॉट सेलिंग एनीथिंग विद वॉल, क्योंकि वॉल का साथ लगता है वो हम नहीं बेच रहे, राइट। तो जी वॉल शू रैक जो है वो, हाँ ये नहीं है, हम नहीं बेचते, ठीक है। सो वी विल से ओके एनीथिंग विद वॉल is also not relevant, irrelevant। ओके, बिग शू रैक, स्मॉल शू रैक, बेबी शू ऑर्गेनाइजर। अब बेबी वाला भी हम नहीं बेच रहे, राइट। अच्छा यार, लेकिन कोट वाला कंटेंट आया हुआ है। अब ऑब्वियसली अगर हम कोट वाला नहीं बेच रहे तो हम ये इसको उड़ा देंगे, कहेंगे दी कोट वाले सामान के तमाम साइड से कर दो प्लीज, कि हम हमारे वाले में कोट नहीं है, ठीक है। नाउ 50 पेयर, अब हम 50 पेयर वाला तो नहीं बेच रहे, तो हम पता करते हैं कि नहीं कितने पेयर होते हैं जनरली स्पीकिंग। 50 50 50 50 100 50 50 50 30 20, इतने वाला तो नहीं है हमारा रैक। तीन उसमें टीयर्स हैं, 15 20 आ जाएंगे, 30 तो नहीं आने लगे। दीज आर इररिलेवेंट, टू मेनी पेयर्स, ठीक है जी। ओके नाउ वी विल से किड्स या नैरो। नैरो हमारा वाला नैरो तो नहीं था, तो नैरो वाला भी खत्म हो जाएगा, इररिलेवेंट, ठीक है। एंड वी विल से ओके शू रैक वाइड एंट्री वे शू स्टैकर। स्टैकर भी हम नहीं बेचते, वी विल से स्टैक irrelevant with stack intent, ठीक है जी। ये ऐसे शू रैक जो स्टैक हो सके उसके ऊपर, हम वो नहीं बेचते। ओके कितने रह गए जी हमारे, 127 भी रहते हैं। तो नाउ वी वांट टू फाइंड आउट Amazon बेसिक्स तो नहीं चाहिए ऑब्वियसली। फ्लोर शू ऑर्गेनाइजर, शू रैक बूट्स विद सीट, हाँ जी सीट वाला भी हम नहीं बेचते नहीं। ओके irrelevant with seat intent, ठीक है जी। Okay, now bin is also wrong, irrelevant with bin intent, ठीक है जी। इसलिए कहता हूँ कि कीवर्ड का इतना आसान काम नहीं है। Okay, going further,
Anything with Amazon is a branded keyword, so okay, now let's just say relevant. Let's find out what it means by kids shoe rack. इसमें भी क्या कोई फर्क डालना ही नहीं डाला उसने, तो किड्स शू रैक कैसा होता है? Okay, this is different. Okay, let's just say it's a lot different. So we will not sell anything with kids. So anything with kid is irrelevant and with kid intent. Okay. Now shoe shelves is fine. Actually डिस्प्ले वाला हम भी करते हैं, डिस्प्ले भी हम नहीं बेचते रही, डिस्प्ले वाला भी irrelevant है with display intent. कवर भी नहीं है हमारा, irrelevant है जी ये. Let's just find out. This is kind of large. Shelves is fine. Black is okay. Let's assume कि हम black बेचते हैं, ठीक है? तो white वाले सारे irrelevant हो जाएंगे हमारे लिए फिर. So contains black would be super relevant for us. Okay, and intent is black. And that contains white is irrelevant for us now. ठीक है, क्यों जी? क्योंकि इसकी इंटेंट जो है वो वाइट की है. तो बंदा लिख रहा है कि वाइट है, उसको बेचने हम कर रहे हैं, हम बाद में स्केल कर सकते हैं वहाँ पे कि हेलो यू लुकिंग फॉर अ वाइट शू रैक बट I don't know, maybe this black one is better. So maybe buy a black one. But उसको कन्विंस करने में लेकिन रेट गिरेगा. अभी नहीं करना उसको, ठीक है? This is for the initial product launch. Okay जी, now we go vertical garage. Garage वाला भी चेक कर लो जी क्या होता है, किस तरह का होता है. So we can confirm all the keywords with garage. These are relevant keywords. Relevant. So जी, anything with garage is relevant. There you go. Now big shoe rack, small shoe rack. Now this can be entry way वाला जो है ये हमारा कीवर्ड सही है. Let's skinny वाला डालते हैं. Yeah. Okay, so contains skinny तो नहीं है हमारा. Skinny shoe rack is irrelevant. Okay, skinny मांग रहे हैं हमसे. हमारा skinny तो नहीं था, ठीक है? Contains clothes. So again, this is also irrelevant because clothes नहीं था हमारे वाला, ठीक है? कोई प्लास्टिक वाला भी नहीं है हमारा मेटल का है. तो जी anything with plastic is irrelevant because this is plastic basically. हाँ जी, यहाँ पे आते हैं तो वर्टिकल शू रैक है हमारा, रेलिवेंट है, ठीक है जी. बिग शू रैक, स्मॉल शू रैक, इट्स ओके. बेबी वाला था नहीं, बेबी वाला हमारा सही नहीं है. So saying baby is irrelevant with baby intent. ये हम कॉलम बना रहे हैं इंटेंट वाला, इसको हम बड़ा अच्छा यूज करेंगे बाद में, शायद आपको आइडियाज मिल जाए इससे प्रोडक्ट लॉन्च के लिए. टावर भी हम नहीं बेचते नहीं. ओके जी, टावर भी हम नहीं बेचते, पर ये रिलेटेड हो जाएगा टावर इंटेंट, ठीक है? ये कॉर्नर वाला भी नहीं है हमारा, इररिलेवेंट है.
Now shoe rack, this is relevant, adjustable नहीं है हमारा, so anything with adjustable is not our keyword. So irrelevant and irrelevant, this is adjustable. So now there's something else, कभी वाला जो shoe है हमारा नहीं है, so we can say okay, I'm sorry, contains कभी, it should be branded. Expandable भी नहीं है हमारा, this is irrelevant, this is adjustable basically. Okay, so now song mix भी relevant है, covered भी relevant है, slim तो नहीं है हमारा, rotating भी नहीं है हमारा. Okay, a good way of saying that is कि हम हमने SFR वाले रैंक किए हुए हैं, तो इसमें just to check अगर आपके पास keywords थोड़े हैं तो फिर you go through all the keywords. Okay, I don't care उसका सर्च 300 है 500 है, I don't care, रैंक करो, उससे सेल लो जितनी मिलती है. तो copy this, go to the counter again, paste it and submit. So now sure है हमारे इधर Zapatos para with small entryway, door space. Entryway वाले जो हैं हमारे काम के हैं, तो we will just say give me all the ones with entryway and these are relevant. Okay, relevant. Small shoe rack narrow ये नहीं है, relevant, cover नहीं है, sorry. We have to find out what this means. Covered वाला जो है ये गलत है, irrelevant है. Top rack metal, this is relevant. Pulling shoe stack, this is irrelevant. Shoe organization, this is half relevant. Foldable irrelevant है. Shoe slots irrelevant है. Organizer different half relevant है ये तो. Plastic shoe rack irrelevant है. Wire shoe rack irrelevant है. Shoe size irrelevant है. Floor shoe rack irrelevant है. Irrelevant. हम space saving के इंटेंट के लिए नहीं जा रहे, वो different intent है. Modern shoe rack is something else. This is half relevant. Irrelevant है ये हमारे लिए. Shoe smell irrelevant है. Branded है. Shoe caddy, I don't know what that is. Let's find out. ये relevant है. Narrow भी relevant है. Draws भी relevant है. Puddle भी relevant है. Pink shoe rack relevant है. हम black बेच रहे हैं. Spinning भी नहीं है हमारा. This is relevant. Irrelevant. Small space की इंटेंट नहीं है हमारी. Mini भी नहीं है हमारा. Small भी नहीं है हमारा. ठीक है. Heavy duties है. Relevant है ये. ठीक है जी. Shoe drawer irrelevant है. Shoe slots irrelevant है. Shoe rack floor irrelevant है. Cookies भी relevant है. This is relevant. This is misspelling. Entry shoe rack relevant है. Gold shoe rack irrelevant है. Farmhouse is irrelevant. Gold भी relevant है. Wide relevant है. Shoe space savers relevant है. Vertical भी इतना नहीं है. हम बाद में देखेंगे Zapatos को. Sorting irrelevant है जी. Large shoe organizer, this is relevant.
ये भी एलिमेंट है वैसे, यहाँ मेन कीवर्ड था irrelevant, irrelevant, shoe log book irrelevant, men's shoe rack relevant है, compact shoe rack irrelevant है, versatile जो है ये branded कीवर्ड है, short shoe rack is relevant, cheap shoe rack is hopefully, sizes is something else, मुझे पता नहीं क्या होता है. Okay, so irrelevant है ये, bit more branded है ये, cube organizer irrelevant है ये, यूज नहीं लगाया हमने उसको, shoot tag this is relevant and misspelling, shoot trees for men's irrelevant, मुझे पता क्या होता है, बड़े मजे का होता है ये shoot trees जो है. entrance shoe rack relevant है ये, compact नहीं है हमारा वाला, shoe rack irrelevant है ये, shoe shelving irrelevant है ये, थोड़ा different आता है ये. portable shoe rack is irrelevant, shoe rack for small space is irrelevant, फोटोज को हम बाद में देखेंगे, थोड़ी चल रहा है. ओके जी, इसको हम देखते हैं हम लोग. शू रैक फॉर बूट्स इरेलीवेंट है ये, किंग शू रैक इरेलीवेंट, ट्राउजर इरेलीवेंट, कवर इरेलीवेंट, शू स्लॉट ऑर्गेनाइजर दिस इज समथिंग एल्स, मेरे ख्याल में ये इरेलीवेंट है, बट यू कैन कंफर्म दिस वे. irrelevant, this is clear. Rack table, this is irrelevant, yes, they need a table as well. Low shoe rack irrelevant, long okay, irrelevant है ये, नहीं sorry tall की बात हो रही है, irrelevant है ये. Outdoor relevant है ये, tube is irrelevant, tube बेच चुका हूँ मुझे तरह पता है ये. Two pocket organizer irrelevant, revolving irrelevant, Topic wide मेरा ख्याल हमारा होगा hopefully, तो that is relevant. Industrial is relevant, collapsible भी relevant है, outside is relevant, irrelevant, cardboard relevant है, car shoe में irrelevant है ये, Yamakasi is irrelevant है ये, half relevant, irrelevant, rolling shoe rack with wheels irrelevant, this is branded actually. Fabric shoe rack is irrelevant, हम नहीं बेचते, हम metal बेच रहे हैं. Shoe and boot rack is relevant है ये. Vertical is irrelevant, first of all लंबा होता है थोड़ा सा. Portals, I don't know, this is most probably portable shoes but not relevant at the moment, we'll check again. Travel shoes is relevant, हम स्पेस सेव नहीं कर रहे इतनी खास कोई, so that is वो कुछ खास different intent है उसकी. Then you have shoe compartment organizer, this is irrelevant, जो compartment नहीं दे रहे हम लोग. Shoe rack for room, this is irrelevant. Tube is irrelevant. Metal shoe rack organizer is super relevant. We'll do it something else. Decorative shoe rack irrelevant, हम decorative intent में नहीं जा रहे हम लोग, ठीक है. Coat shoe rack relevant है, relevant. I think you have got the point. I'll just pause the video and do these as well. Okay, so here we go. हमने सारे keywords से at least वो सारे के सारे हमने यहाँ पे कर लिए, ठीक है. So now we will say okay, ये वाले सारे keywords हैं Spanish के, sorry, ठीक है. तो हम इसमें इस तरह कॉपी करेंगे इसको और हम इसको करेंगे आपके इस तरह Google Sheets में. We already have the sheet from the last time. Okay, now paste them over here.
हमने फंक्शन यूज करना है जिससे ये सारे कीवर्ड्स हम बल्क में जो है वो ट्रांसलेट कर लेंगे. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जर्मन और जापान. जापान में थोड़ा मुश्किल होता है, पर जर्मन में इजी है ये काफी. ठीक है, तो दिस इज Google Translate find me A1 from EN to here again. Hopefully they are still Spanish. Yeah, we have to find the keyword for Spanish then, and then we will be able to do that. Okay, so they added at Espanol. Okay, so we will just say okay, find me the Espanol. Sorry. Then Espanol to English. देखिए ये सारे यहाँ पे आ गए. So रेडी हो गई जी. यहाँ पे relevancy तो हर चीज चेक कर लेते हैं हम लोग. फिर कॉपी करें जी, इसको कॉपी दें यहाँ पे. So we can just say okay, this is how you do keyword research for Spanish or German or Canadian English, sorry, but you can also task French keywords with this one. ठीक है, तो ये हम करेंगे और हम कहेंगे शू बॉक्सेस जो है वो हमारा एलिमेंट है. शू स्लॉट्स पे एलिमेंट है. शू रैक लार्ज इज रेलिवेंट. cabinet is relevant. Shelf for shoes is relevant. Shoe computer. Okay, this is probably organizer, so this is relevant. Wooden shoes. Okay, so that is bamboo wala imprint, so relevant. To store shoes, that means shoe storage, that is irrelevant because this is just a rack for normal usage, temporary usage, not storage. Carrier shoes. So I don't know this one, so maybe you can copy it and say Spanish to English. Let's see what Google says about this one. On this one. Please, Cynthia. Carrier shoes. Okay, so that is for probably portable shoes. So that is irrelevant. Washing machine for shoes is irrelevant है. Okay. Irrelevant. Irrelevant. Those shoes भी बेचते हैं हम लोग. Man building shoes is irrelevant. Boxes to store shoes is irrelevant. 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 Irrelevant and irrelevant. So we just have let's copy and say यहाँ पे basically हम लोग इसको आप लगा देते हैं. So say it to be and should at large this is relevant as it should be to, and then you have estante para zapatos ordinary. ढूंढ लेते हैं यहाँ पे relevant है और था ये वाला भी है relevant. ये भी relevant है. And then there's the last one, is this one.
रेलिवेंट, बाकी सारे के सारे इरेलीवेंट है हमारे, ठीक है जी। ओके, सो आई गेस दिस इज डन नाउ, या ब्लैंक फाइल खत्म हो गया, ठीक है। सो नाउ जो यहाँ पे रह गई हैं जस्ट एज फिल्टर, जो कैसे स्पेसिफाई नहीं है और वो किसी इंटेंट में भी जल्दी नहीं पड़ रहे, so we can maybe have a filter for those ones जो कि रह गए हैं, उसमें हम कहेंगे कि give me the blank ones, give me the highest search volume। इसमें देखिए यहाँ पे 43,000 है, बट यहाँ पे फिर भी SFR नहीं आ रहा है इसका, so we can say okay, relevant, the filter organizer so choose relevant, branded, okay, let's just have filter of 1000 plus without SFR, so that means greater than 1000। ओके, चूज ऑर्गेनाइजेशन रेलिवेंट है, इरेलीवेंट है, इरेलीवेंट है, रेलिवेंट है, इरेलीवेंट है, इरेलीवेंट है, इरेलीवेंट, okay, so now we have whatever we have otherwise is now maybe entry भी वाला हम देख लेते हैं जो हाईएस्ट है इसका, रेलिवेंट कर देते हैं हम लोग, वरना others maybe entryway is a bit important keywords, so finally the one is entryway. Okay, so we have a lot of keywords with that. So anything with maybe greater than 300 should be relevant. Okay, this may be irrelevant हो जाएगा. So again, we're trying to find the best, most number of keywords possible. Okay, true entry relevant है. हम small नहीं बेचते, कोड भी नहीं बेचते, क्रिएटिव भी नहीं, और ये सुपर रेलेवेंट है क्योंकि ठीक है। Now we can say okay, filter and say चैनल पे ब्लैंक है, इसका मतलब है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये हम उसको इजीली कह सकते हैं after removing this one, unimportant at this stage। okay, इतना बड़ा हमारा सर्च वॉल्यूम 8 लाख का है, तो हम 300 के पीछे भागना नहीं है हमने। अगेन अगर आपका मेन कीवर्ड या कहते हैं 3000 सर्च वॉल्यूम पे है, तो फिर आपको 100 के पीछे भी भागना चाहिए मेरे ख्याल में। Anyone can disagree with me, but that's how I think, but मुझे सबकी अपनी अपनी होती है। ओके जी, सो नाउ हमने खत्म कर लिया सारा कुछ, तो अब हम करेंगे कि now give me only the ones, now this will be renamed as relevancy check, and now this one will be only the relevant, and super relevant will be moved forward to the next sheet. Let's use this sheet, and now these are relevant keywords. जी, इसमें एक आएगा क्या था इसका नाम, इसकी प्रोग्रेस की आदत हुई है, so I'm gonna have to use that. Okay, I don't know why that didn't work, but चलो ठीक है, हम ये वाला यूज कर लेते हैं। Okay, so we have found the formula, the one that works for me every time, which is the one for word count formula। अब हम चाह रहे हैं
कि हम लोग ऐसे कीवर्ड्स ढूंढेंगे जो सुपर एलिमेंट हों, जो कि बड़े ही अच्छे तरीके से हम लोग उसको यूज़ कर सकें लिस्टिंग के अंदर, कॉपी के अंदर और बैकएंड के अंदर भी। तो बेसिकली हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं वो कितने हैं, देखिए हमारे पास कीवर्ड निकले हैं 450, ठीक है। एंड दिस इज रेड वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली इसको अब आपने इसको दोबारा देखना होता है खुद से, ठीक है। नाउ जस्ट सॉर्ट बाय एसएफआर and say now this is how you should be doing कि आपके सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ये वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने एसएफआर वाले कीवर्ड्स इंक्लूड करनी है लिस्टिंग के अंदर, ठीक है। नाउ आवर रूट कीवर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड इज शू रैक, ठीक है। अब उसका हमें ये करना है कि हमने जो है कहना है कि जी फाइंड मी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, जो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कौन से होंगे, ओके, सबसे ज़्यादा ये वाले होंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स तो खराब होंगे जो कि सही नहीं होंगे। दिस इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इररिलेवेंट कीवर्ड कुछ आ चुके हैं यहाँ पे आपके पास, ठीक है, फिर आपने रिमूव करने हैं। अब यहाँ पे कुछ आपको सिविल की ब्रांड कीवर्ड है, ये स्टैकेबल कीवर्ड हम नहीं बेचते। सो देन अगेन हमने इस तरह से किया है। इसके बाद भी जो आपके रिलेवेंट कीवर्ड्स बचेंगे उसमें अक्सर जगहों पे चीज़ें होंगी ऐसी जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, मतलब कि इररिलेवेंट होंगी, आपको देखनी पड़ेंगी मैनुअली, ठीक है। फिर बैम्बू वाला भी हम नहीं बेचते जी, कोट वाला भी हम नहीं बेचते। We got two of them with code. Okay, so now we can say let's just move on with only the SFR ones, जिसमें SFR आ रहा है, and remove this one जो कि ट्रिपल लाइन लगाया हुआ है हमने एंड पे, and then sort by largest to smallest, and then what I would need is I will need a keyword which also have the root keyword, ठीक है। So एक दफ़ा यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं वीडियो को, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। हमने कीवर्ड्स इस तरह अरेंज कर लिए हैं कि हमने फाइंड आउट कर लिया कि जी ये कीवर्ड इस टाइम पे इस तरह चल रहा है, एंड देन वी विल बी फाइंडिंग आउट कि अब इसको यूज़ किस तरह करना है। सो दैट विल बी द नेक्स्ट वीडियो।